गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सब ने 6 चैप्टर जो है वो पूरा खत्म कर लिया है। अब हम हमारा 7 चैप्टर पे आएंगे। वेदर, क्लाइमेट, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड क्लाइमेट। सो वेदर इज मीन्स कि हमारे आसपास जितने भी सीजन्स है उसके ऊपर हम वेदर कहेंगे। क्लाइमेट जो सराउंडिंग है उसे क्लाइमेट, जो हमारे क्लाउड्स फॉर्मिंग है वो सारी क्लाइमेट की प्रोसेस है। एंड अडेप्टेशन ऑफ द एनिमल टू क्लाइमेट, कैसे हम लोग क्लाइमेट के साथ अपनी अपनी बॉडी को अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में लेंगे। Do you remember the thing that do you ask to pack when do you have a heading to hill station? When the sky is cloudy, your parents instead do you carry an umbrella? However, you heard older in your family discuss the weather before planning a family function. You must have heard the expert discuss of the weather before the start of the game. You have ever wonder why? The weather may be profound effect on a game. It is the profound effect on our life. Many our details activity planned based on the weather prediction for the day. There are daily report of the weather on a television, radio, newspaper. But do you know this weather is really is? In this chapter, we will study about the weather, climate. We will also see that the different form of life are adapt to the climate and their habits. ओके, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कभी बारिश के दिन होते हैं तो मॉम कहती है कि बारिश आ रही है तो बारिश आने वाली होगी शायद, तो तुम अम्ब्रेला के साथ में ले जाओ। कभी भी कोई फंक्शन करना है तो हम सोचते हैं कि कौन सी सीजन में करें। अगर जो समर में करते हैं वेदर में, अगर वेदर एज अ रेनी वेदर होगा तो हम आउटसाइड वेडिंग या आउटसाइड इवेंट नहीं कर सकेंगे। अगर सनी इवेंट होगा तो भी बहुत नहीं, बट हमें सिंपली ऐसा वार्म होगा वैसे इवेंट में हम आउटसाइड कर सकते हैं। सो दैट हमें जब देखना है तो हम हमारा वेदर के मुताबिक हमारे इवेंट्स प्लान करते हैं, हमारा डे प्लान करते हैं। सो वेदर इज इफेक्ट इन आवर बोथ आवर लाइव्स एंड आवर सराउंडेड। तो व्हाट इज दिस वेदर? वेदर ये कौन सा क्या वेदर है? इन द फिगर 7.1, that 7.1, the weather report from the news is given. We find the daily weather report carrying information, temperature, humidity, rainfall during the past 14 hours. It also predicts the weather of day, humidity as might be known, and it says resume that the moisture in a air. So okay, humidity means that moisture in a air. जो हमारा वेदर है उसके बारे में आएंगे। वेदर मैक्सिमम 16.1 सेल्सियस पूरा डे का वेदर है। मिनिमम 22.6 सेल्सियस, ये बहुत ही यहाँ का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो 35 के ऊपर ही होता है। देन सनसेट, सनसेट कौन से टाइम पे होगा? 4:40 पर। सनराइज मीन्स 7:15 AM। द मून सेट मीन्स मून जब जाएगा तब 11:13 AM। मून राइज इट 11:5 PM। द माइस्ट मॉर्निंग, मिस्ट इन अ मॉर्निंग, फॉग, फॉग मीन्स जो हमारी झाकड़ कहते हैं वो सारी जो ह्यूमिडिटी है। partly cloud sky, minimum temperature will be 20 degrees Celsius, humidity is 83%. ह्यूमिडिटी मीन्स वेदर में जो मॉइस्ट होती है, जो मोस्ट ऑफली वैन रेनी सीजन में ज्यादा आती है, तो दैट कॉल ह्यूमिडिटी on the 31st. A sample of this reporting from the newspaper. I wonder who predict these reports. The weather reports are predicted by the meteorological department of government. This department color data of temperature, wind and etc make the weather prediction. Okay, most ofly meteorological department है जो हमारा वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वेदर हवा से कहाँ से आती है, कहाँ जाएगी, कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सनी ज़्यादा है या प्रेशर ज़्यादा है, उसके ऊपर से वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसा वेदर होगा। 7.1 activity. Cut out the weather reports of the last week from a newspaper. If you do not get the newspaper at the home, borrow from your neighbor and or friends. So copy this report in your notebook. You can also collect the weather report from the library. Past all the cut out the
white sheet or the chart paper. Now record the information of weather reports collected by you in table number 7.1. The first row is a sample of fill of the column according to data chart and you have to predict. Okay, this is date, maximum temperature, minimum temperature, humidity, maximum humidity and the rainfall. कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी चीजें हैं डेट के वाइज पूरा लिखना है. Rainfall is may not be recorded all the days since there does not rainy days or leave the space from the blank. So the data is not available. रेन नहीं होगी, रोज थोड़ी रेन होती है, सो उसके दिन हमें ब्लैंक कर देना है. Rainfall is a measure by an instrument called the rain gauge and it is basically measure cylinder with the funnel of the two of collected रेन वाटर. अब रेन वाटर कलेक्ट करेंगे उसमें ऐसे ऐसे रख देंगे, उसके ऊपर फनल होगा, वो एक सिलेंडर टाइप का होगा, उसके ऊपर एक फनल होगी, उसमें पानी सारा कलेक्ट होगा, जितना पानी कलेक्ट होगा उतनी रेन होगी. हम कहते हैं ना 2 इंच आए, 3 इंच आए, 4 इंच आए, तो ये सारी जो है वो हमारे रेन गर्ज के ऊपर से करेगा. डू यू ऑल 7 days हैव सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperature record may be same for some days and all the parameter are not same for the 2 days. Over week there may be consider variation. The day-to-day condition of atmosphere placed with the respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed. It is called weather at that place. The day to day condition of the atmosphere at the place with respect to means कि आने ध्यान में, इसको ध्यान में ले लेके सब कुछ करेंगे. टेम्परेचर को ध्यान में लेंगे, ह्यूमिडिटी को ध्यान में लेंगे, रेनफॉल को ध्यान में लेंगे. ये सारी चीजें जो हम कलेक्ट करते हैं दैट कॉल अ वेदर. अदर फैक्टर आर कॉल एलिमेंट ऑफ द वेदर. जो सारे फैक्टर है, टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, वो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ द वेदर. द वेदर ऑफ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर द वीक. देर इज वाई ऑफन से टुडे इज वेदर इज सो ह्यूमिड. रोज के रोज हम वेदर देखेंगे, कभी कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि टुडेज वेदर इज ह्यूमिड. द वेदर वाज रेनी तो दैट इज अ रेनी डे. एंड द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट कैन बी vary over very short period of time. It can be sometime that is sunny in the morning but suddenly cloudy appear from the nowhere and start raining heavily. Heavy rain can be vanish a matter minute and give away the bright shine. You must have a several such experience. Try to recall any experience that share with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. Okay, sometimes क्या होता है कि कैसा होता है कि सब कभी कभी ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है और दूसरे सेकंड सीधी सनशाइन हो जाती है. सुबह एकदम अच्छा वेदर है, तुम लोगों ने कहा आज तो वॉक करने निकलेंगे, शाम को निकले वॉक करने और क्या हुआ, बारिश आ गई, पूरे भीग गए. सो दैट इज वेरी complication in this weather. Look at the graph and give below the show the maximum temperature record during the 3 August 2006 to 9 August as the Shillong मेघालय. मेघालय के अंदर जो हमारा पूरा रिपोर्ट देखा है, देखो टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन देखो, एक दिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एक दिन पूरा घट गया, 3:2 जो ऐसे. So it is clear where the weather report is the maximum and minimum temperature record every day. Do you know this temperature are record in chapter number 4 for Lund. कैसे हमें टेम्परेचर करते हैं, हमने थर्मोमीटर जब लिया पढ़ा था 3 में, तब हमारे हीट में तब हमने देखा था. आई वंडर वाई वेदर चेंज फॉर फ्रिक्वेंटली. व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर टू फर्स्ट प्लेस. ये वेदर है क्यों जल्दी से चेंज हो जाता है, उसका सोर्स क्या है. There are special thermometer of the purpose called maximum and minimum thermometers. You can guess that during the
maximum temperature when we and the minimum. The maximum temperature of the day occur generally in afternoon and minimum temperature generally early morning. Can you understand why summer we feel miserable in afternoon at the comfortable early morning? Okay, most ofly maximum कब माना जाता है? जब आफ्टरनून के समय पर जब हमारा सन एकदम ऊपर होता है, तो दैट इज अवर सनशाइन जो हमारे के ऊपर आ जाती है, वो कहते हैं. एंड देन द अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग कैसी होती है? जहाँ पे सबसे कम होता है. तो हम जब समर होता है, समर में आफ्टरनून इज अ वेरी मिजरेबल एंड अर्ली मॉर्निंग इज अ गुड फॉर अस. ऑल द चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. सन के वजह से सारे वेदर के चेंज होते हैं. द सन इज अ ह्यूज स्पीयर ऑफ द हॉट गैसेस एट द वेरी हाई टेम्परेचर. द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम दिस very large. Even to energy sent to our sun huge, and the source of this cause changes weather. Energy absolute reflect on earth is surface, ocean, atmosphere, plan importance role determined by the weather and place. If you live near the sea, you would be realize that the weather are place different from the place to place in desert and near the mountain. ओके, सन इज अ मेजर इफेक्ट ऑन अस. सन के ऊपर से हमारा मेजर इफेक्ट होता है. सन ज्यादा से ज्यादा गर्मी देता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका सोर्स बहुत यूज है. जो भी सारे वेदर में चेंज आते हैं, वो सन की वजह से चेंज आते हैं. 11, जो हम सन से दूर होते हैं तो हमें ठंडे होते हैं. नाउ सन इज कमिंग नियर अस, दैट इज विल बी very hotter than a usual day. So in a डिफरेंट रीजन में अलग अलग डिफरेंट जैसे डेजर्ट के लिए अलग होता है, वैसे नियर एंड माउंटेन. What about the time sunrise and the sunset? You know that nights become a dark early and you do not get much time of play. Are days shorter in winter than summer? Why did find out the yourself complete the project given the chapter. ओके, समटाइम्स तुम लोग देखोगे कि जो समर है उसमें डे लंबा होता है. डे लंबा होता है मीन्स सन ज्यादा देर रहता है. एंड नाउ इन विंटर दैट इज 6, इट्स ऑल्सो डार्क. 6 o'clock ऑल्सो डार्क. 6 बज जाते हैं, फिर भी बहुत ही अंधेरा हो जाता है. सो डे इज अ वेरी शॉर्ट. क्लाइमेट मेटेरोलॉजिकल रिकॉर्ड. ओके, क्लाइमेट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नाउ यू हैव अ होमवर्क. होमवर्क तुम लोगों को करना है वेदर के बारे में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ वेदर. वेदर के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है 2 times. ओके, हैव अ नाइस डे. गुड बाय. ओके.